Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. Normally we pick subjects relating to immigration law because the vast majority of the questions that we receive are related to immigration matters. But we are on this show able to cover all areas of English law. What we will be discussing today is immigration matters, and in particular we'll be looking at how to make a settlement application. Over the last few weeks we've looked at how somebody is sponsored to the UK, how their visas are extended in the UK. Now what we'll look at is the final stage of the immigration process in the United Kingdom, which is a settlement. And then separate to that, normally one then applies for nationality, but that's after one obtains indefinite leave in the United Kingdom. But as always, it's a live show, so the number that you can call on appears at the bottom of the screen. Although we're discussing immigration matters today, you can call us and discuss any matters which may be of interest to you, our viewers. The number that you can call on should be appearing at the bottom of the screen. Just a couple of matters before we get going. Firstly, obviously it's a live show, so we're not able to look at any documents that you have in your possession before we advise you. If it's the case that I need to look at your documents, then I'll ask you to scan them and send them to me, and I'll have a more detailed discussion with you later on. Before we look at the topic for the day, let me just take the first call for the day first. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji, thank you for calling. Ji, what's your question? My question is, I'm currently filling in the VA-F4 form. Okay, yep. And one of the questions is, when did you first meet your sponsor? I understand, yep. Now, I'm calling on behalf of my brother. Okay, I understand. He is married, they're cousins. Okay. So the first time he met her was when he was 5. Okay. So what would be an appropriate answer? Normally, in my view, with that question, you really look at when they actually met, when they're able to sort of understand who each other were, so to speak. So at the age of 5, they'd be too young. It'd be too young to remember that that they met at the age of 5 to understand who that person is, etc. So I don't normally refer to that. What I normally say is that has your brother been going to Pakistan sort of on a regular basis over the last 10-15 years? Yeah, he's been back 5 times now. Okay, so what I normally say is that we are related to each other as first cousins, and we have met each other several times over the years. The first of which was not when he was 5, maybe when he was 7, 8, when he sort of would have had more of a comprehension of who it was he was meeting, being able to remember who it was that he was meeting. So maybe not, I don't normally go for 4, 5, anything of that nature. Probably a date when they're slightly older and they can recollect meeting that person, remembering that, yep, it was my first cousin that I was meeting. So probably more around 7, 8, 9, depending on what he thinks he can remember. But give it a bit of a narrative. Okay, look, we've met each other over the years. First time it was approximately this particular year. Now, what I would say on this point is, as you've said, over the last, let's say 10-15 years, they've met 4 or 5 times. The key point to remember is submit with the application the old passports as well, because the old passports will have the visa stamps on there, so they will be able to see that over the last 10 years there's been 4, 5, 6 visits, so they'll know that this person was obviously aware of the existence of their first cousin, who's now going to be the wife. So not only should you submit the current passport, which will have the most recent visits, submit the old ones as well, so they will see that obviously this person has been going to back to their home country a number of times over the last 10 years or so. So that sort of sets the background to it. But in terms of direct answer to your question, I think 5 is a bit too early. They won't really know what's going on. So maybe about 7, 8, 9 or something. That's probably better. Is that okay? Brilliant. Yes, Jazakallah, thank you very much for your call, brother. So as I was saying just before we started, is that obviously settlement is the last part of the immigration process, and that's what we're going to look at today. Obviously, because it's a live show, we're not able to look at documents. I do apologize. I'll have to take the next call and I'll come back to that in a bit. Hello, assalamu alaikum. Well, Islam, sir. Thank you for calling back. What's your question?
سر میں نے پوچھا تھا میرے پاس لیو ٹو ریمین ورک پرمٹ ہے جی ٹھیک ہے اوکے. تو میں نے ایک دفعہ ایکسٹینشن ہو گیا تو دوسری دفعہ میں نے ایکسٹینشن کرائی ہے. جی ٹھیک ہے اوکے. تو ابھی یہ میں پوچھنا تھا میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کتنی دفعہ ہوگا میرا؟ کتنی کیا ہوگا سوری آپ کو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ میں کب اپلائی کر سکتا ہوں؟ کب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی جو بھی ویزا ہے نا وہ ٹیئر 2 جنرل ویزا ہے نا ورک پرمٹ. جی ٹیئر 2 جنرل ویزا ہے. جنرلی اس کا رول یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیئر 2 جنرل میں جب آپ 5 ایئرز کمپلیٹ کرنے والے ہیں تب کر سکتے ہیں. 28 days before your 5 years are completed آپ اپلائی کر سکتے ہیں. So that's the starting point. جو ٹیئر 2 کا جو ویزا ہے اس پہ 5 ایئرز آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ 28 days before اپلائی کر سکتے ہیں. So that's the starting. جنرل ویزا میں سامنے لیکسی میں مجھے ملا تھا. او آپ نے کہا کہ ورک پرمٹ ویزا ہے. جی ورک پرمٹ لکھا ہوا اس پہ لیو ٹو ریمین ورک پرمٹ. سوری اس میں ورک پرمیٹڈ لکھا ہے ناٹ ورک پرمٹ. جی ورک پرمیٹڈ لکھا ہے. دیٹس فائن نو پرابلم. آپ کو لیگسی میں ملا ہے تو کتنے سال کا ملا تھا آپ کو؟ پہلے ملا تھا 2.5 ایئر ابھی ملا 2.5 ایئر. جی ٹھیک ہے. تو اس میں کب ملا تھا آپ کو یاد ہے رفلی جو فرسٹ ٹائم مجھے ملا تھا وہ 2014 میں ملا تھا. سمجھ گیا جی. تو وہ جو ویزا ہے نا آپ کو اس میں ورک پرمیٹڈ لکھا ہے. وہ ورک پرمٹ نہیں ہے اس میں ورک پرمیٹڈ لکھا ہے. نو پرابلم. وہ جو ویزا ہے نا وہ ہیومن رائٹس ٹائپ ویزا ہوتی ہے جس میں آپ کو 10 ایئرز کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. 10 ایئرز اس کے بعد آپ انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سو آپ نے 2.5 کیا پھر اس کے بعد 2.5 کا آپ کو ایکسٹینشن ملا. تو وہ جو لیگسی میں جو ویزا ملتی تھی جو وہ نارملی کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو آؤٹ سائڈ دا رولز ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں یہ ڈسکریشنری لیو ہم نے آپ کو جو دی ہے وہ 10 ایئر کی ویزا ہوتی ہے. آؤٹ سائڈ دا رولز ڈسکریشنری لیو کی ویزا وہ 10 ایئر کی ویزا ہوتی ہے. جی سوری دوسرا جو میں پہلے فرینڈ کو ملا تھا انہوں نے پہلے ان کو مل گیا تھا 2-3 سال پہلے ان کو ملے گا. انہوں نے انڈیفینٹ کے بعد انڈیفینٹ مل گیا تو اس کے بعد برٹش پاسپورٹ اپلائی کر دیا. جی جی صحیح. جی کیونکہ پرابلم کیا ہے اس میں کہ 2012 میں یہ سسٹم چینج ہوئی تھی. 2012 میں جس کو ویزا ملی تھی سمر 2012 سے پہلے اس کو بھی ویزا اس نے کیا کیا تھا کہ 3 ایئرس کی ویزا اس نے دی تھی. اس کے بعد اس کو 3 ایئرس کا ایکسٹینشن کرنا تھا. 6 ایئرس کے بعد وہ لوگ کو انڈیفینٹ ملتا تھا. وہ جو سسٹم تھی نا 3+3 اینڈ آفٹر 6 ایئرس آپ کو انڈیفینٹ ملتی ہے وہ سسٹم تھی سمر 2012 سے پہلے کی. وہ سسٹم تھی جس کو ویزا دی گئی آفٹر سمر 2012 فار ایگزامپل آپ کو جو ویزا ملا اس کو 3 ایئرس کی ویزا نہیں دیتے اس کو 2.5 ایئرس کی ویزا دیتے ہیں. اور اس کے لیے ناٹ 6 ایئرس اس نے 10 ایئرس انٹروڈیوس کیا ہے انڈیفینٹ کے لیے. جو آپ کو یاد ہے نا کہ پہلے جو شادی کی ویزا ملتی تھی اس میں بھی 2 ایئرس کے بعد انڈیفینٹ ملتا تھا. پھر سمر 2012 میں اس نے چینج کر دیا کہ شادی کی ویزا والے کو بھی ہم 5 سال کے بعد انڈیفینٹ دیں گے. تو یہ جو 2012 کے جو چینجز تھے سمر 2012 کے جو چینجز تھے تو اس میں آپ بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی ویزا اس کے بعد ملی تھی ڈسکریشنری لیو ملی تھی مگر وہ 10 سال والی ڈسکریشنری لیو ملی تھی آپ کو. یہ پرابلم ہے. 2000 میں مقصد یہ تھا کہنے کا ابھی میرے ساتھ بچے ہیں میرے فیملی ہے میرے اوپر نوٹ پبلک فنڈ نہیں لکھا ہوا. میرے بچوں کے اوپر میری وائف کے اوپر نوٹ پبلک فنڈ لکھا ہوا ہے. تو آپ کو پتا فیس کتنی زیادہ ہوگی ہے ان کی تبھی اور بڑھ رہی ہے. جی اصل میں پرابلم ہے کہ فیس بہت ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جو بینیفٹ بھی لیتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اتنا 6,000 پاؤنڈ نکالنا. جی بہت مشکل ہے. منیمم ایٹ دا مومنٹ NHS فی کے ساتھ ایک پرسن کی وہ اڈلٹ ہے یا تو چائلڈ ہے اباؤٹ 1,500 پاؤنڈز پر پرسن کی فی ہے ابھی. 1,500 پاؤنڈز کی فی ہے. I mean the only other ways کوئی بچے ہیں آپ کے جو یہاں بورن ہوئے تھے UK میں؟ جی 2 بیبی ہیں ان کو بھی سیم ہی انہوں نے ویزا دیا پر نوٹ پبلک فنڈ لکھ لیا. وہ ٹھیک ہے. اس کی ایج کیا ہے وہ بچے کی؟ 1 3 ہے 1 6.5 ہے. وہ جو 6.5 والا ہے نا تو جب وہ 10 ایئرس کا ہوگا تو اس کو برٹش پاسپورٹ کے لیے وہ اپلائی کر سکے گا. سو سم ٹائمز وہ پیپل کیا کرتے ہیں کہ لوگ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کو باہر جانا نہیں ہے تو سم ٹائمز وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کے لیے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی نہیں کرتے بیکاز وہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ ویٹ کرتے ہیں جب بچے کی ایج 10 ہو جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں.
یا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک اور ایکسٹینشن لیتے ہیں. جب وہ 9 کی ایج ہوتی ہے تو نیکسٹ ایکسٹینشن نہیں لیتے, ویٹ کرتے ہیں کہ جب اس کی 10 کی ایج ہو جائے, وہ برٹش بورن ہے, اس نے 10 ایئرز UK میں گزارا ہے, تو وہ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, تو وہ برٹش پاسپورٹ کی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. ایسے بھی سم ٹائمز اگر پیسے نہیں ہے تو ایسے بھی پیسے سیو کرتے ہیں لوگ بائی ناٹ اپلائنگ فار دا چلڈرن, اور بعد میں صرف پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں. وہ صرف جو UK میں بورن ہوئے ہیں اور جب اس کی ایج 10 ہوتی ہے اس کو اپلائی ہوتا ہے, اس کے لیے اپلائی ہوتا ہے. جی. اور بیچ میں اگر اس کے پاس ویزا نہیں ہے تب بھی پرابلم نہیں ہے, ایز لانگ ایز دے ور بورن ان دا UK اور 10 ایئرز وہ UK میں رہے تو اس کو برٹش پاسپورٹ کے لیے اور برٹش پاسپورٹ کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے. سو یہ ایک آپشن ہے. آپ نے جو بات کی نا, ایکسپینسو پروسیس ہے, ہسبینڈ وائف 2-3 چلڈرن کے لیے اپلائی کریں گے, اٹ بیکمز ویری ایکسپینسو. تو اگر آپ باہر جانے والے نہیں ہے تو ایک آپشن آپ کے لیے یہ ہے کہ بچے کے لیے اپلائی نہ کریں ابھی. ویسے تو اسکول ایج کے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ دیر از نو ایشو اباؤٹ دیم ورکنگ اور اینی تھنگ. اوبویسلی آپ کے لیے تو اپلائی کرنا ہی پڑتا ہے کام کے لیے ایٹسیٹرا. سو آپ کے لیے آپ اپلائی کر لیں, وائف کے لیے اگر کرنا ہے تو وہ کر لیں, اگر پیسے سیو کرنا چاہے تو بچے کے لیے اپلائی نہ کریں. I mean that's the only option that you have. But آپ کی جو ویزا ہے نا وہ 10 ایئر والی ویزا ہے, آپ نے جو کہا اس پہ. Thank you, sir. No problem. Chalo, thank you very much for your call. So just going back to what we were discussing, sort of the final step of the immigration process just before you apply for a passport, which is to apply for indefinite leave. So let's have a look at that to see how somebody goes about making an indefinite leave application. So your husband or wife, they're here in the United Kingdom with a spouse visa. They would have been granted initially a 2.5-year visa. They've extended it. They've got another 2.5-year visa. And now what we're looking at, after the completion of 5 years, we're looking at making an application for indefinite leave. So let's look at what do you need to do for that. How do you qualify for that? Now, the key thing is, with all applications, there are some mandatory documents which are submitted. And in my experience, we can sort of whiz through that quickly because that normally doesn't present a problem. There are specific matters that we need to look at, which we'll look at in a bit. But in terms of mandatory documents, that's fairly straightforward. Obviously, with all applications, you submit a valid passport for yourself, a valid passport for your spouse. Just on that, if I just pause there and look at the requirement for a valid passport. Now, the reality is, although the form requests a valid passport, sometimes an expired passport may suffice. I'll go into detail in relation to that after I've taken the next call. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम जी, मेरा नाम असमत अली है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ. जी. मैं स्पेनिश नेशनल हूँ. जी, ठीक. और मेरे 2 बच्चे हैं. ओके. वो दोनों ओवर 18 हैं. जी, ओके. दोनों स्पेनिश नेशनल हैं. जी, ठीक है. मैंने अपनी वाइफ के लिए अप्लाई किया था. जी. वो पाकिस्तान में है. जी. तो उन्होंने मुझे ये कह के रिफ्यूज कर दिया कि आपकी शादी का मसला है. जी. सर्टिफिकेट नहीं था उस वक्त मेरे पास. जी. तो अब मुझे वहाँ से स्पेन से मुझे वो मैरिज सर्टिफिकेट मैंने जमा कराया हुआ था, वो मुझे मिल गया. जी, ठीक है. तो अब मेरा जुडिशियल रिव्यू आ रहा है, 8 महीने के बाद की डेट दी उन्होंने. जी, ठीक है. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर वो सर्टिफिकेट होम ऑफिस को भेजूं जी तो वो उसको कंसीडर करेंगे कि मुझे फिर स्टिल वहीं जाना पड़ेगा अभी? जी. आपकी वाइफ जो है वो यूके में है अभी? नहीं, वो पाकिस्तान में है. वो पाकिस्तान में है. तो आपको ओके, ठीक है. आप तो अपील चल रही है ना, आपकी अपील चल रही है? अपील चल रही है जी, जुडिशियल रिव्यू अपील चल रही है. जी, ठीक है. ओके. और जो मैरिज सर्टिफिकेट वो मांगते थे तो वो नहीं था मेरे पास. हाँ, वो तो निकाह नामा मांगते थे ना, वो निकाह नामा मैंने दिया था उनको. निकाह नामा दिया था आपने? कंसीडर नहीं किया उसको. तो आपकी शादी कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी या स्पेन में हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी. तो क्या आपने निकाह नामा दिया था? दिया था. निकाह नामा का ट्रांसलेशन भी दिया था आपने? सब इंग्लिश में दिया था जी. और नादरा का कोई रजिस्ट्रेशन था उसके साथ के? वो भी सर्टिफिकेट भी दिया था नादरा का भी, उसके बावजूद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. तो क्या कहा उसने वो रिफ्यूजल में? इसके अलावा तो कौन क्या दे सकते हैं शादी का? वो वेडिंग फोटोग्राफ्स मांगे थे ऐसे कोई वेडिंग फोटोग्राफ्स? वेडिंग फोटोग्राफ भी दिए थे हमने. ठीक है. तो उसने रिफ्यूजल में क्या लिखा था उसने? उन्होंने ये लिखा जी, हम आपकी जो शादी से सेटिस्फाइड नहीं है. पर मगर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है वो? क्या आगे कुछ कहा था उसने?
नहीं, अब इससे ज़्यादा आगे फर्दर डिटेल जो है वो सारे पेपरों पे है और वो मेरे रजिस्टर के पास है। तो अब जो मैंने वहाँ अपनी शादी रजिस्टर कराई हुई थी स्पेन में, जी, अब उसका मुझे सर्टिफिकेट मिल गया लास्ट मंथ। जी जी जी। अब वो एक उसको मेन प्रूफ है थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है कि वाई दे आर सेइंग कि अगर उसने बच्चे की वीज़ा दे दी, राइट, सो दे बच्चे के पास और बच्चे के पास स्पेनिश पासपोर्ट, समझ गया, बच्चे के पास स्पेनिश था तो सिर्फ वो वाइफ के इशू पास नहीं नहीं था। है, और उनके पास भी जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है वो भी है उनके पास स्पेनिश की। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन दोस सर्कमस्टांसेस हाँ, ये व्हाई इट वाज वैसे रिफ्यूज्ड। बड़ा हम भी बहुत सरप्राइज हुए जब उन्होंने ये रिफ्यूज किया। आप ये करो, बेस्ट है ना, ये जो अपील आपकी चल रही है ना उसको कंटिन्यू रखो। हाँ जी, उसका डेट का इंतजार है, अब अगस्त में है। कोई बात नहीं, वो कंटिन्यू रखो अभी, और दूसरा एप्लीकेशन डाल दो वहाँ वो पाकिस्तान में दूसरा एप्लीकेशन डाल दो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ। आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आई थिंक सो ये बोलते हैं कि अगर वहाँ दोबारा एप्लीकेशन देनी है तो इसको विड्रॉ करो। नहीं, विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन में वो दो डाल सकते हैं। वो जो यूके में एक अगर आपने यूके में अगर आपने अप्लाई किया और उसमें अपील चल रही है तो आप दूसरी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, दूसरी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं डाल सकते दूसरी यूके में। मगर ये डिफरेंस है कि अगर आपकी यूके की एप्लीकेशन नहीं है, वो बाहर से आने वाले हैं, तो इसमें एक तो वो चेक ही नहीं करते कि दूसरा एप्लीकेशन आपने डाल दिया। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपील विथड्रॉ ना करो, इसलिए कि अगर सेकंड टाइम आपने अप्लाई किया और इसमें रिफ्यूज़ हो गया और इसमें आपको अपील मिली तो एक और साल वेट करना पड़ेगा आपको। सो इसमें इट्स नॉट वर्थ इट। आपका अपील जो चल रहा है ना उसको चलने दो, राइट। और जो अपील में प्रिपरेशन में आप जो कहते हैं कि ये मैरिज सर्टिफिकेट से ये एविडेंस है, वो सब डालना चाहिए। हो सकता है कि होम ऑफिस वाले उसके लॉयर्स जो होते हैं देखेंगे, शायद वो दे देंगे, हो सकता है। मगर इन माई एक्सपीरियंस ये जो लॉयर्स उसके होते हैं, दे डोंट लुक एट इट अंटिल अबाउट 1 month बिफोर द हियरिंग। सो आपकी हियरिंग कब आई है? अभी 2 महीने हो गए। तो डेट आ गई ना आपकी? डेट कब है हियरिंग? डेट आ गई, हाँ जी। तो कब है, किस महीने में है? अगस्त में। अगस्त में है ना। तो ये जो उसका लॉयर्स है, तो अगर आप प्रॉपर सबमिट सब कुछ करेंगे विद द स्पेनिश सर्टिफिकेट, अराउंड जुलाई में वो देखेंगे, जुलाई में। राइट, ओके। सो दैट विल बी लुक्ड एट बाय द लॉयर्स, वो बिकॉज वो अपील में जाने वाला है ना। तो होम ऑफिस के लॉयर्स व्हेन दे प्रिपेयर इन द केस, तो अगर आप आगे से केस प्रिपेयर करके उसको दे दे और उसको कहे कि प्लीज़ रिव्यू दिस केस, हो सकता है कि वो चेक करेंगे। बट देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू कि वो भी कंटिन्यू रखो। और अगर आप करना चाहें तो पाकिस्तान में भी आप दूसरा एप्लीकेशन डाल दो विद मोर एविडेंस ऑफ द मैरिज। और इसमें नॉर्मली मोर एविडेंस तो ये है ना कि आपको स्पेन से मिल गई सर्टिफिकेट प्लस वेडिंग फोटोग्राफ्स, एनी अदर एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप, बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट्स, जो भी और डॉक्यूमेंट्स आप रिलेशनशिप के बारे में भी डाल सके वो डाल दो। फिर अगर नादरा का कोई लेटर मिल जाए कि बस ये प्रॉपर्ली ये निकाह जो हुआ था इट्स बीन प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हियर, तो वट एवर यू कैन डू, तो अगर वो डाल देंगे, एक तो ये है कि यू डोंट हैव टू पे अ फी बिकॉज इट्स अ यूरोपियन एप्लीकेशन। सो हो सकता है कि you might get a positive decision say within about 2 months, which is how long even European applications are taking at the moment. So April में हो सकता है कि आपको कोई पॉजिटिव डिसीजन आ जाए। अगर पॉजिटिव डिसीजन ना आए तो यू जस्ट लीव दैट, क्योंकि आपकी अपील तो वैसे भी चलती है और जुलाई अगस्त में इसमें आपको डिसीजन मिलेगा। दैट्स द वे आई वुड डू इट। द ऑल्टरनेटिव इज़ कि यू डोंट आप बॉदर ही ना करें रीअप्लाई करने का, just wait and see what happens at the hearing. मगर end तक wait ना करें, as soon as your file is ready आप home office को भेज दें and request that the lawyers look at it. Problem क्या है कि they're not very helpful unfortunately. आप वो भेजते हैं, it may well be that they don't look at it until 2-3 weeks before the hearing. इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो देखेंगे, और even देखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग एप्लीकेशन को अपील को कंसीड कर देंगे। समटाइम्स उसका एटीट्यूड ये है कि इवन इन अ वीक केस उसका एटीट्यूड ये है, इवन व्हेन दे नो कि वो आर जाने वाले हैं, वीक रिफ्यूज़ल है, इवन देन वो समटाइम्स कहते हैं कि इट डजंट मैटर, हियरिंग में देखेंगे जो होगा वो होगा। सो अपील प्रोसेस में मुझको तो इतना होपफुल नहीं लगता, वो तो कोर्ट में ही समटाइम्स फैसला होता है, जज ही ये प्रॉपर सॉर्ट आउट करता है। मगर द वन अदर ऑप्शन इफ़ यू वांट टू क्विक इन द प्रोसेस इज़ टू रीअप्लाई। Thank you very much for your call. Thanks so much for your help. Thank you. No problem. Thank you very much for calling. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum.
वालेकुम सलाम सर। जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी भाई, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा सवाल यह है कि मैंने स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन अप्लाई की थी, उसमें मैंने वो हेल्थ चार्ज मिस कर दिया था, मैंने खुद से अप्लाई की तो मुझे पता नहीं था, तो मेरी पहली एप्लीकेशन इनवैलिड होके वापस आ गई। समझ गया। तो फिर मैंने दोबारा वकील से मिलके अप्लाई किया तो मैंने हेल्थ चार्ज एवरीथिंग पे किया, लेकिन मेरी दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज कर दी कि वो कहते हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन आउट ऑफ टाइम। इस मैटर को मैंने जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया, तो वहाँ पे उन्होंने जब मैंने चैलेंज किया तो जो इमिग्रेशन वकील ने मेरे सोलिसिटर को लेटर लिखा कि आप जुडिशियल रिव्यू विड्रॉ कर दें, हम इसका फ्रेश डिसीजन देंगे विद इन 3 मंथ। जी जी। सो मेरा सवाल ये है कि अगर सपोज अगर मेरा सोलिसिटर उसको विड्रॉ कर लेता है तो फिर ये इसका पॉजिटिव में जवाब आएगा और नेगेटिव में आएगा, और क्या मुझे बेस्ट मेरे लिए क्या है कि इसको मैं जुडिशियल रिव्यू में लेके आगे जाऊँ या इसको विड्रॉ कर लूँ? जी। अब आपके पास बच्चे हैं या नहीं है? ये बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, राइट। मेरी बीवी को शादी की हुई तकरीबन 10 साल हो गए। आई अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है कि स्ट्रेट अवे विथड्रॉ ना करो। जब वो कहते हैं ना होम ऑफिस वाले कि वी विल लुक एट द केस अगेन, द मैटर विल बी रिव्यूड, बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपका जो सोलिसिटर है, और आई एम श्योर ही नोज व्हाट इज डूइंग, आपका सोलिसिटर होम ऑफिस को पुश करे कि लोग हम विथड्रॉ करने के लिए तैयार है, मगर कंफर्म करो कि आप किस टाइप की वीज़ा देंगे आपको। अगर उसने कहा कि वो विथड्रॉ करेंगे तो डेफिनेट आपको वो वीज़ा देने वाले हैं। सो दैट्स 100% श्योर कि आपको वीज़ा देने वाले हैं, वरना ऐसे नहीं कहते कि हम विथड्रॉ करेंगे। इश्यू सिर्फ क्या है कि ये हो सकता है कि वीज़ा वो देंगे मगर आपको 10 साल वाली वीज़ा देंगे, और आपकी वीज़ा शुरू होगी जब से वो आपको वीज़ा देंगे तब से आपका 10 ईयर शुरू होगा। ये प्रॉब्लम है इस पर। तो दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड कि किस टाइप की वीज़ा आप देने के लिए तैयार है। अगर आपको क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिला और सिर्फ आपने कंसेंट ऑर्डर जो उसका आता है कि चलो साइन कर लो और अग्रीमेंट कर लो कि बस ये फिनिश हो गया, तो अगर आपने वो साइन कर लिया तो हो सकता है कि आपको वो ह्यूमन राइट्स की वीज़ा वो दे देंगे, मगर वो नई शुरू होगी अब से, और वो कहेंगे कि जब से आपका IHS पेमेंट नहीं हुआ था, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ था, तो आपकी वीज़ा ख़त्म हो गई थी। जब आपका फ़र्स्ट वीज़ा की जो एक्सपायरी डेट थी तब आपकी वीज़ा ख़त्म हो गई थी, अभी से नई वीज़ा शुरू होगी, इन बिटवीन आप ओवरस्टे थे। आई थिंक दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी। इसमें क्या करने वाले हैं, इट्स अनसर्टन एट द मोमेंट। सो आई डोंट नो कि अगर आपका सोलिसिटर उसको पुश कर सकता है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन उसको मिल जाए तो दैट वुड बी हेल्पफुल। अदरवाइज़ आपको वीज़ा तो मिल जाएगी। अगर उसने कहा है कि हम रिव्यू करेंगे, उसका मतलब यही है इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, कि आपको वीज़ा तो मिल जाएगी। मुझको द ओनली कंसर्न इज़ कि कब, व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा एंड when does the visa start from? Does it start from 0 years? ये है ना कि अगर उसने कहा कि ठीक है वीज़ा दे देंगे, अभी से शुरू होगी फ्रॉम February 2018, तो इसमें तो ये है ना कि 2018 से शुरू होगी, you have to wait till 2028 before you qualify for indefinite leave. तो अगर वो 10 साल के रूट पे चलाते हैं तो उसको मैं कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता? वो दोबारा फिर मुश्किल हो जाएगा आई थिंक, बिकॉज सेकंड टाइम क्या होगा कि उसने वीज़ा तो दे दिया ना आपको। सो जब आप जाएंगे तो आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि ह्यूमन राइट्स का आर्ग्यूमेंट है ये, कि ये ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो उसका रिस्पॉन्स ये होगा कैसे ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसको तो वीज़ा हमने दे दिया, हमें उसको ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि आप वापस जाओ। उसकी गलती, उसने खुद गलती की कि उसने IHS पेमेंट नहीं दिया, तो हमने क्या किया, हमने तो उसको वीज़ा भी दे दिया। तो इस दौरान उन्होंने मुझे काम से भी बंद किया हुआ है, आप काम भी नहीं कर सकते। वो तो सही बात है ना। जी जी, ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये जो उसने ये सिस्टम जो बनाई है ना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि वो तो IHS पेमेंट नहीं किया, या तो कुछ और गलती हो गई, तो फिर दोबारा भी आप अप्लाई करते हैं तो व्हाट दे से, इसके जब हम आपको ना का जवाब देते हैं तब से आपका वीज़ा ख़त्म नहीं होती, ये वीज़ा तो पहले से ही ख़त्म होगी। ऐसे ही समझो जब आपकी ओरिजिनल वीज़ा ख़त्म हो गई थी, ऐसे समझो कि आपने अप्लाई ही नहीं किया एक्सटेंशन के लिए, सो अब आदमी तब से ओवरस्टे हो गया। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो अब ये करो कि लॉयर से बात कर लो, आस्क हिम टू क्लैरिफाई कि वो क्या करने के लिए तैयार है। इन द एंड आपके पास बिल्कुल चॉइस ही नहीं है, तो देन गो विद इट, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि आपको एटलीस्ट वीज़ा तो मिल जाएगी ना यहाँ से। तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर योर कॉल on that. It's a very unfortunate situation with the current immigration rules. We'll look at this in greater detail after we've taken a short break.